Welcome back to the another video tutorial from TI Lectures. In this video lecture, we'll be discussing about the cancer, right? And also we'll discuss some important differences between the cancer cells and the normal cells. And also we'll discuss different types of genes which are responsible for causing cancer. So first of all, if we see what is cancer, जो cancer है, it's not a single disease, it's a group of diseases in which some of the body's cells grow uncontrollably and separate to other parts of the body. So what is cancer? If we see, first thing here to discuss, what is cancer, right? This is the first thing we'll discuss here. Cancer, it's a group of diseases, it's a complex disease in which some of the body's cells grow uncontrollably and they separate to other parts of the body, they separate to different regions of the body, right? Cancer, it can start anywhere. बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये जो कैंसर है किसी भी जगह हमारी बॉडी में स्टार्ट हो सकता है. There is no particular position or location for the cancer to start to get initiate, क्योंकि ये तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ये बॉडी में किसी भी जगह स्टार्ट हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में स्टार्ट हो सकता है, राइट? नॉर्मली अगर हम देखें जो ह्यूमन सेल होती है, if we draw a rough diagram of the cell here, we see this is the rough diagram of a cell, and सेल में कैपेबिलिटी होती है, ये फंक्शन करती है और ग्रो हो जाती है. उसके साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी होती है दैट इट कैन डिवाइड, दैट मीन्स वन सेल कैन डिवाइड इनटू द टू एंड सब्सिक्वेंटली टू सेल्स डिवाइड इनटू द फोर सेल्स एंड सो ऑन, राइट? सो जो ये डिवीजन प्रोसेस है, दिस कैपेबिलिटी जो है सेल्स में डिवीजन होने की, राइट, जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी है या ग्रो होने की कैपेबिलिटी है, एंड टू फॉर्म द न्यू डिफरेंट सेल्स. व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू रिप्लेस द डैमेज्ड सेल्स, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड सेल्स, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द डेड सेल्स. तो जो ये सेल है, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बॉडी में कोई डैमेज्ड सेल हो या कोई ओल्ड सेल हो या एजड सेल हो कोई, या कोई और एबनॉर्मल सेल हो, उस सेल को रिप्लेस करने के लिए एक सेल को डिवाइड होना पड़ता है, देन इट फॉर्म्स द टू डॉटर सेल्स. गॉट माय पॉइंट? समटाइम्स ये जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, दैट मीन्स इस सेल को डिवाइड होना है, उसके बाद ये दो सेल्स में डिवाइड होगी एंड सब्सिक्वेंटली दीज टू सेल्स विल फर्दर डिवाइड into the two each cells, and ultimately they replace the worn out cells, they replace the old cells, they replace the aged cells or abnormal cells or any kind of damaged cells. ये एक sequential process होता है. तो कभी क्या होता है, sometimes this sequential process breaks down and abnormal or damaged cells जो होती हैं, they grow. You got my point? They grow and divide when they should not. That's very important to discuss here, that जो abnormal cells होती हैं या जो डैमेज सेल्स होते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए जो नॉर्मल सेल होती है वो डिवाइड हो जाती हैं ताकि डैमेज्ड सेल या ओल्ड सेल को रिप्लेस करे. ये एक प्रोसेस होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस. कभी क्या होता है, कोई चेंज आ जाती है किसी डिफेक्ट की वजह से, ये जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है इट ब्रेक्स डाउन एंड जो डैमेज्ड सेल है इट ग्रोज एंड डिवाइड व्हेन दे शुड नॉट, right? So there are these are the cells which may form tumors, और आगे जाके यही cells damaged cells या old cells ही आगे जाके यही cells हैं जो tumor बनाते हैं. Got? Tumor means, tumor is an abnormal mass of cells. What is tumor? Tumor means abnormal mass of cells. ठीक. और ट्यूमर की अगर हम बात करें, ट्यूमर्स कैन बी कैंसीरियस. ट्यूमर्स जो है दे कैन बी कैंसीरियस, ट्यूमर्स कैन बी कैंसीरियस और नॉन कैंसीरियस. दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज कैंसीरियस ट्यूमर एंड सेकंड वन इज नॉन कैंसीरियस. और जो कैंसीरियस ट्यूमर है इनको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, और नॉन कैंसीरियस ट्यूमर को हम बिनाइन ट्यूमर्स भी बोलते हैं.
ठीक, तो जो sequential process है, if that breaks down, abnormal cells will ultimately form an abnormal mass of cells. We call that tumor. Tumor के दो types हैं. First one is cancerous और malignant tumor. Second is non-cancerous और benign tumor. ठीक, और जो cancerous tumors है, cancerous tumors में क्या property है? Cancerous tumors जो है, they can separate to distant places inside the body. They can spread to other parts of the body. That means they can travel to distant regions of the body, and there they form the secondary tumors. And this spreading process is known as metastasis. This spreading process, that means cancerous और malignant tumors जो है, उनमें कौन सी प्रॉपर्टी है? उनमें ये प्रॉपर्टी है, they can travel to different or distant parts inside the body, different regions inside the body, different places inside the body, and they form the new secondary tumors, and that spreading process is called as metastasis, right? And जो benign tumors होते हैं, they do not spread to other parts of the body, they do not invade to the nearby tissues, and when benign tumors when they are removed, they do not grow back. But if we talk of the malignant tumors or cancerous tumors में एक और प्रॉपर्टी है, एक कैपेबिलिटी है कि when cancerous और malignant tumors are removed, उनमें एक ये प्रॉपर्टी है कि they can grow back, and that growing back condition is known as recurrence. That growing back condition is known as recurrence. But जो benign tumors होते हैं, right, they do not invade to the nearby tissues, they do not spread to the other parts of the body, right? And benign tumors can be removed, and after removal they cannot come back. But if we talk of cancerous tumors, they can come back after their removal, and that they can grow back. That condition is known as recurrence. Got my point? So sometimes what happens, जो benign tumors होते हैं, they may be quite large or life threatening. For example, brain tumors. Brain tumor, right? So brain tumor is actually a benign tumor, non-cancerous tumor, but जो उनका size होता है, because sometimes they may be quite large, and they may be life threatening. And one example is brain tumor. So this was overall big picture regarding the cancer. What is cancer? We came to know here that cancer is an actually uncontrollable mass of cells. That means uncontrollable division of cells. And when there is the damaged cells or the old aged cells which need to be worn out, जब वो उनको worn out नहीं किया जाता है, जब वो उनको रिप्लेस नहीं किया जाता है नए सेल से, तो वही abnormal cells एक abnormal mass of cells बनाते हैं, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं. एंड ट्यूमर के फिर दो टाइप्स होते हैं. वन इज कैंसीरियस, that's also called as malignant, and second one is non-cancerous, that's also called as benign tumor. और जो cancerous और malignant tumor की property है और capability है that it can spread to the distant or different places inside the body, and that condition is known as metastasis, or after their removal they can grow back. That condition is known as recurrence. But if we talk of the non-cancerous tumor or benign tumor, that cannot grow back after their removal. But sometimes what happens, they are quite large and they can be life-threatening. For example, brain tumor, right? So this was regarding this section, what is cancer. Now we'll discuss another important thing here, that what is the difference between cancer cells and normal cells. Because we came to know that the difference is very important between the cancer cells and the normal cells. The difference may be in the appearance, the difference may be in the size, or difference may be in their function. So this is the important section
which we'll discuss in this video lecture, the difference between the cancer cells and the normal cells, right? So first thing we need to discuss is that there are many differences between cancer cells and normal cells. For example, जो cancer cells होती हैं, they can grow in the absence of signals. You got my point? Because हर कोई सेल जो बॉडी में प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए सेल, हर कोई सेल अगर इस सेल को डिवाइड होना है तो डिवाइड होने से पहले इसको एक सिग्नल मिलेगा ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सिग्नल विल बी ट्रांसड्यूस्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म देन अल्टीमेटली टू द न्यूक्लियस, और वो सिग्नल इस सेल को ये बताएगा कि आपको यू नीड टू डिवाइड. दैट मीन्स दिस इज नॉर्मल सेल, इट नीड्स द आउटसाइड सिग्नल टू गेट डिवाइड, राइट? बट इफ वी टॉक ऑफ कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल्स होती हैं, दे ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ सच सिग्नल्स एंड नॉर्मल सेल्स ओनली ग्रो व्हेन दे रिसीव सच सिग्नल्स. सो फर्स्ट वन इज जो कैंसर सेल्स होती है, जो कैंसर सेल्स होती है, दे ग्रो in absence of signals. They grow in absence of signals. And जो normal cells होते हैं, normal cells, they only grow when they receive such kind of signals. And second important difference is that जो cancer cells होती हैं, they ignore the signals that normally tell the cells to divide. For example, कभी क्या होता है, इस सेल को ये दिस इज ए नॉर्मल सेल, इट रिसीव्स ए सिग्नल कि आपको डिवाइड होना है, और जब ये डिवाइड हो गई देन एक और सिग्नल आएगा दैट विल टेल टू द सेल्स कि अब आपको डिवाइड नहीं होना है, तो देन दिस नॉर्मल सेल विल स्टॉप डिवाइडिंग. बट व्हाट हैपेंस इन कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल्स होते हैं, इट इग्नोर्स सच काइंड ऑफ सिग्नल्स. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर से जो सिग्नल आ रहा है वो इस कैंसर सेल को कहता है कि यू नीड टू स्टॉप डिवीजन, बट जो ये कैंसर सेल है, इट इग्नोर्स दैट सिग्नल एंड इट डिवाइड्स कंटिन्यूअसली, राइट? सो द इंपॉर्टेंट सेकंड डिफरेंस इज दैट जो कैंसर सेल्स होती है, इट इग्नोर्स, कैंसर सेल्स होती है, इट इग्नोर्स, कैंसर सेल्स इग्नोर्स सिग्नल्स. कौन से सिग्नल? सिग्नल्स विच विल टेल इट टू स्टॉप डिवाइडिंग. उन सेल्स को कैंसर सेल्स इग्नोर, उन सिग्नल्स को कैंसर सेल्स इग्नोर करते हैं, राइट? एंड नाउ what is the third important this difference between the cancer cells and the normal cells? जो cancer cells होते हैं, they invade into the nearby tissues, they invade into the different organs and spread to other areas inside the body. But जो normal cells होते हैं, they stop growing when they encounter other nearby cells. For example, जो cancer cells होती हैं, cancer cells जो होती हैं, कैंसर सेल्स जो होती हैं, दे स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके आगे सेल है, पीछे सेल है, ऊपर सेल है या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कैंसर सेल्स को. इट कंटिन्यूअसली डिवाइड्स. बट अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मल सेल है, इट डिवाइड्स, इट फॉर्म्स टू सेल्स, राइट? और टू सेल्स दे ईच विल फॉर्म द टू सेल्स. और जब व्हेन दिस सेल will have a contact, will encounter with the another normal cell, then this cell will stop dividing. अब ये divide नहीं होगी. That condition is known as contact inhibition. But जो cancer cells होती हैं, it loses the contact inhibition. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये it can form piles of cells. It can form, for example, अगर ये cancer cell है, it divides, it forms second, then third, fourth. There is no contact inhibition. One on the another, it will form the piles of cells, right? So the third important point is here that जो cancer cells हैं, they divide continuously. They divide continuously. That means they lose contact inhibition. They lose property of contact inhibition. Contact inhibition means जब नॉर्मल सेल दूसरी सेल से टकराती है, कंटैक्ट हो जाती है, देन दे बोथ सेल स्टॉप डिवाइडिंग. लेकिन कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी, दीज कैंसर सेल लूज दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज.
right? The fourth important kind of difference between the cancer cells and normal cells is that जो cancer cells होती हैं, they tell blood vessels to grow towards them. They tell blood vessels to grow towards tumors and supply tumors with oxygen and nutrients, right? And also remove waste products from the tumors. So this is an important kind of difference between the cancer cells and normal cells, that जो cancer cells होती हैं, the cancer cells जो होती है, they request the blood vessels to supply the blood to the growing tumor and supply the oxygen and nutrients to the growing tumor, right? That condition is known as angiogenesis. That condition is known as angiogenesis. और नॉर्मल सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. दिस प्रॉपर्टी इज especially seen in the mostly seen in the cancer cells. कि cancer cells, they request the blood vessels to grow towards the tumors and supply the tumors with oxygen and nutrients and also remove the waste materials or waste products from the tumor, right? The fifth important difference between the cancer cells and normal cells is that कैंसर सेल्स जो होते हैं दे हाइड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, बिकॉज जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, दैट ऑलवेज पेट्रोल्स इनसाइड अवर ब्लड, इनसाइड अवर बॉडी टू फाइट ऑफ एवरी इन्फेक्शियस एजेंट. लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अपने आप को इम्यून सेल्स से छुपाती है. दे हाइड देम सेल्स फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, राइट? बिकॉज इम्यून सिस्टम जो है दैट नॉर्मली एलिमिनेट्स डैमेज्ड और abnormal cells, but when these cancer cells they hide themselves from the immune system, that means they escape removal. Got my point? The fifth point is that जो cancer cells होती है, cancer cells they hide from immune system. They hide from immune system. And the sixth important property is that जो cancer cells होते हैं, they also trick the immune system into helping them to stay alive and grow and convince immune cells to protect it instead of destroying it. That's very important property of the cancer cells. that जो cancer cells होती है, usually what they do, first one, they hide from the immune system in order to escape the removal. The second important part that जो cancer cells होती है, they trick the cells of the immune system and tell the immune system to keep these cancer cells alive and convince immune cells to protect it instead of destroying it. So this was all about the difference between the cancer cells and the normal cells. And in this video lecture we discuss what is cancer, what is difference between cancer cells and the normal cells. And in the next video lecture we'll be discussing about the causes of cancer. Thank you.